Are you able to hear me now properly? Same thing. Let's just continue. Okay, are you able to hear or we can then skip the session because if you can't able to hear that session का मतलब नहीं रहेगा. मैं हेडफोन चेंज करके देखता हूँ शायद. but- Because mine's really over 100 Mbps. So I don't think so यहाँ पे कोई increase होगा मेरे end से चलेगा. Uh, can you speak? Back in now? No, this is worse. Uh, wait. Am I audible to you? Yeah, I can hear you. आप सुन पा रहे हो मेरे को ठीक से? Am I audible? I can hear you. Can you hear me? Yeah. It's a little like the voice is a little far. Do you have any maybe headphones or something? No, I don't use so gradually without restaurant करता हूँ. Speak again. Better? सुन पा रहे हो ठीक से रखूँ? It's mumbling. एक बार फिर से चेक करोगे आपको कैमरा ऑफ करके ट्राई करो. There is screen issue. Better now? Can you hear now? Yes, it's a little better. ये तो फिर बस स्पीक का ही issue होगा. ठीक है, अब let's start. कहीं पर अगर आप नहीं समझ पा रहे हो anything, so yesterday we started with other components instead of accounting, and our core area था to understand how accrual to cash, cash accrual works. Example one which we saw yesterday, and then you were supposed to solve example number 2, 3, and 4. I can see there are some modules around. एक बार आप मुझे quickly walk through करवा दोगे what you have done, why you have put some for a debit side, credit side, what is your analysis of the ledger posting, and then we can go to the book. Okay. I'll start with example 2. So we have the accounts payable account. They have given us January 1st is 10,000, so brought forward. And Why then not this not forward? is January 1st. Yeah, but you could have put a debit side also, right? Why you have choose to put a credit side? Accounts payable is a credit account liability. It's a liability, it's a credit account, so you put on a credit side. ठीक है. The balance then is 10,000, and then closing is 18,000. Okay. So they're talking about cash basis expenses. So I just removed that from the accounts payable, What is the 80,000. journal, What? what is the journal entry of the cash payment? Uh, debit accounts payable, credit cash. Okay. So then the remaining balance is 88,000, which would be on the credit side if we haven't paid and it's an accrual expense. Okay, perfect. Good to know. Actually, example 3. Example 3, prepaid rent is an asset account. So the brought forward is on the debit side, 5,000, Perfect. and then carried forward 9,000. Uh, they've said we have had a rent expense of accrual basis of 60,000. What So is the I journal? uh, credit prepaid rent debit expense. Perfect. Okay. Then the remaining is 64,000. So that is so we still haven't maybe accrued it. That's why it's on the debit side. No, 64,000 on the debit side. So उसका interpretation क्या हो सकता है? What is prepaid expense? Is it an asset or a liability? Asset. Asset.
So prepaid and rent always have a debit balance. If you further debit, what is the meaning of it? that we have paid more, More but prepaid expenses. So if in this example you have a difference coming on your debit side, what is the interpretation? That you have made more cash payment of prepaid expenses again this year by 64,000. Clear with yeah, the interpretation? yes. Okay, we have made more what? More payments, more prepaid expenses this year. Okay, So you have a difference here. This is your difference on a debit side. What is the meaning of prepaid expense debit? It means your prepaid expenses are going up. When your prepaid expense will go up, when you will pay more expenses in advance. when Clear, we right? will pay. You already have paid. That is why you have a difference from debit side. Your Uh, total of your ledger account are 69,000. So difference is on a debit side. So why difference will arise? Because you have already made a more payment in advance, and that is why your liquid rate has increased. So this payment is already done, and hence you have a difference on debit side. okay, Clear है concepts are important, mathematics आ जाएगा, but concepts important है interpret करना चीजों को. okay. चलिए example 4. Example for it's earned and revenue. Earned and revenue is a liability, so balance brought forward is on the carried side, and then we have cash collected from the customers. So what Uh, is the entry when you collect the cash from the customer? what is the what? What is the entry when you collect the cash from the customers? Uh, debit cash credit revenue. So while you are crediting revenue, you are just collecting the cash. Revenue is recognized when it is earned, when you deliver the goods or services. Collection is an invoicing activity. Revenue is an activity based on the delivery of the services or delivery of the goods. You are just collecting the cash. So what could be your entry? Your entry can be either of the two things. Number one, the first entry possible, it could be cash account debit to accounts receivable. Or another possible entry is cash account debit to deferred revenue. Let's understand why we can have two entries. Suppose your scenario one, you have already, let's say, delivered a goods of $10,000, but you have not invoiced yet. So what is your entry? Accounts receivable debit 10,000 to revenue 10,000. And now when you collect this particular cash, your entry is cash account debited to accounts receivable. So this is a one possible entry. What is another possible entry? That you have just received a cash in advance, but yet to deliver the services. So your first entry is cash account debited to deferred revenue 10,000. Then your second entry will be deferred revenue account debited to revenue account when you deliver the services. So either of these two entries are only possible. Question doesn't say कि आपने services दिया है नहीं दिया है, but there is a reference of unearned revenue. दूसरा नाम क्या होता है इसका? Deferred revenue. So the question is giving you a reference towards the scenario number 2, where you are collecting the cash in advance, but you have not delivered the services. Now, my question to you, आपने entry मुझे गलत बताई. You said cash to revenue. तो आपने लेजर पोस्टिंग यहाँ पर कैसे कर दिया? This is my नहीं, question. रेवेन्यू मैंने उसके बाद किया तो मैंने मिक्स किया है. कैश वाज द फर्स्ट एंट्री बिकॉज इट्स इन द क्वेश्चन. सो What 200,000. is the external entry? Cash account debited to A cash account debit credit earned revenue, by unearned revenue. because we might have not we have received the money but we have not provided the goods or services. Clear है concept? Yes, So now you have a difference on a debit side. तो उसका क्या interpretation हो सकता है? that we have earned the revenue.
Yes, so out of earned revenue, now 1,85,000 तक का जो भी revenue है आपने earn कर लिया because you would have delivered the goods or services. ये शीट में जो भी concepts है, examples, will be doubt because this is the base we are building to go into the chapter. Will be doubt आपको? No. Now I prefer this approach. जब भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कैश टू अप्रूवल या अप्रूवल टू कैश, always prepare a T-shaped ledger account. Find out difference is डेबिट साइड पे है या क्रेडिट साइड पे है, and then try to identify कि वो डिफरेंस का इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है. Another option जो आपकी बुक में दिया है is to remember the formulas. एक बार हम क्विकली देख लेते हैं, हम एग्जांपल पे चलते हैं. So let's say कैश बेस का रेवेन्यू आप कब लोगे? जब कैश रिसीव होगा, अप्रूवल बेसिस पे रेवेन्यू ऑन द रेवेन्यू. एक्सपेंसेस कैश बेसिस पे कब होंगे? जब आप कैश पे करोगे. अप्रूवल बेसिस पे आप कब रिकॉर्ड करोगे? जब एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे. तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स है. अब फॉर्मूला पे चलते हैं कि अगर आपको कैश बेस रेवेन्यू को अप्रूवल बेस रेवेन्यू पे कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो. कमिंग बैक टू दिस एग्जांपल, एग्जांपल 4 को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है. So let's say हमने example 4 में क्या किया. So if I just try to build a formula in example 4, what we say, formula can be cash received. This is your this particular item. You add opening balance of deferred revenue less you subtract the closing balance of deferred revenue. So whatever mathematical things will come as a result, it will be your अप्रूवल रेवेन्यू. सो दिस कुड बी द आइडियल फॉर्मूला अगर हम ये पर्टिकुलर टी शेप लेजर अकाउंट को फॉर्मूला में कन्वर्ट करें. सो द फॉर्मूला इज कैश कलेक्टेड प्लस ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग बैलेंस. दिस विल गिव यू अ डिफरेंस हियर ऑफ 1,85,000. सो दिस कुड बी द आइडियल फॉर्मूला. आपकी बुक में देखते हैं क्या है फॉर्मूला. इट्स अ कैश बेस्ड रेवेन्यू प्लस बिगिनिंग ऑन अर्न रेवेन्यू माइनस एंडिंग ऑन अर्न रेवेन्यू. अब इन्होंने फॉर्मूला में दो चीजें और दी है, एंडिंग एआर माइनस बिगिनिंग एआर. इसको एक बार समझते हैं, एंडिंग एआर और बिगिनिंग एआर क्या होता है. नाउ लेट्स से कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जहां पर यू आर हैविंग अ सिचुएशन ऑफ अनबिल्ड रेवेन्यू. फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है कि आपके पास बिगिनिंग अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस है 10,000, आपके पास क्लोजिंग अकाउंट्स रिसीवेबल का बैलेंस है 20,000. During the year, आपने कैश कलेक्शन किया है let's say 75,000. So what is the approval sales? सेम हम लोग क्या करेंगे, टी शेप का लेजर अकाउंट बनाएंगे. So let's say I think we already have this example number 1. Let's not create new one. पुराने वाले को समझते हैं. So हमने ये फर्स्ट एग्जांपल 1 में क्या किया था, we had a beginning balance of $20,000, ending balance of $35,000. हमने कैश कलेक्ट किया है लेट्स से $1,35,000 का. द क्वेश्चन इज आपका अप्रूव्ड रेवेन्यू क्या होगा. तो हम फॉर्मूला क्या बिल्ड कर सकते हैं. आवर फॉर्मूला कैन बी योर कैश कलेक्टेड प्लस क्लोजिंग एआर लेस ओपनिंग एआर. सो दिस कुड गिव यू द फॉर्मूला ऑफ अप्रूवल बेसिस सेल्स रेवेन्यू. अगर ये फॉर्मूला दोनों को हम मर्ज करें, एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 4 दोनों को हम मर्ज करते हैं, तो आपका क्या फॉर्मूला बनता है, कैश कलेक्शन प्लस डेफर्ड रेवेन्यू बिगिनिंग बैलेंस माइनस डेफर्ड रेवेन्यू क्लोजिंग बैलेंस प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल क्लोजिंग बैलेंस माइनस अकाउंट्स रिसीवेबल ओपनिंग बैलेंस. तो उन्होंने सेम फॉर्मूला किया है, कैश बेस्ड रेवेन्यू प्लस बिगिनिंग डेफर्ड माइनस एंडिंग डेफर्ड प्लस एंडिंग ईयर माइनस बिगिनिंग ईयर गिव्स यू अप्रूवल मेथड ऑफ रेवेन्यू. दो तरीके हैं अगेन, या तो आप सिंपल टी शेप का अकाउंट बनाओ, लॉजिक्स यूज करो एंड गेट द आंसर्स डन. अगर डिफिकल्ट लगता है हर बार लॉजिक यूज करना तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. अल्टीमेटली आपको रिजल्ट एक ही मिलेगा बिकॉज़ द फॉर्मूला इज नथिंग, जो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है उसका एक रिप्रेजेंटेशन ही है. आर यू क्लियर विद दिस फॉर्मूला हाउ इट इज क्रिएटेड? Why do we need to combine accounts receivable and earned revenue? So it is possible कि मान लो आपकी कंपनी में 100 कस्टमर्स है. इट इज नॉट पॉसिबल कि 100 के 100 कस्टमर्स आपको एडवांस पैसा देंगे. हो सकता है कि 100 में से 50 कस्टमर ने आपको एडवांस पैसा दिया है और 50 कस्टमर को आप पहले गुड्स और सर्विस देते हो, फिर वो लोग 60 डेज बाद उसका पेमेंट करते हैं.
So when you see a real life scenario, you will see both type of customers. Customers doing the advance payment and customer doing the arrears payment. So if you see a holistic example, आपको वो दोनों चीजें mix करके भी exam में पढ़ सकते हैं. And the cash collected, so I'll add the cash for both accounts. Sure, both, yes. So cash collected will be total cash collected. And then you will put earned revenue for opening closing, accounts receivable for opening closing, and then you have to see which side the difference is coming up, and that will give you the say an approval basis पे क्या sales हुआ है उसका information. Okay. ठीक है, चलिए फॉर्मूला आगे बिल्ड करने का ट्राई करते हैं. You see sales side, let's say exactly अगर approval side पे होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है. So suppose we have a two example, example number 2 and example number 3 are our relevant example. Let's try to build हमने क्या किया है example number 2 बताया है. So what we are saying कि हमारा फॉर्मूला क्या हो सकता है कि cash paid. I am looking at example number 2. Cash paid मुझे ऐड करना है closing accounts payable. So I'll say add closing accounts payable. मुझे माइनस करना है ओपनिंग अकाउंट्स रिसीवेबल. ये मुझे दे सकता है अप्रूवल एक्सपेंस क्या है. प्लस मेरे पास प्रीपेड भी हो सकते हैं. तो अगर मेरे कोई एक्सपेंस ऐसे होंगे जो मैं एडवांस में पे कर रहा हूँ, कोई एक्सपेंस ऐसे होंगे जो मैं बाद में पे कर रहा हूँ. अब एडवांस में है तो मेरा क्या फॉर्मूला बनता है, इधर इज कैश पेमेंट बट मुझे ऐड करना है ओपनिंग प्रीपेड और मुझे सब्ट्रैक्ट करना है क्लोजिंग प्रीपेड. सो अगर ये फॉर्मूला में बिल्ड करता हूँ तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, व्हाट इज माय अप्रूवल एक्सपेंस. सो अगेन या तो आप टी शेप पे अकाउंट्स बनाओ, जस्ट पुट द इंफॉर्मेशन प्लग करो एंड सी डिफरेंस कहां पर आ रहा है एंड गेट अ लॉजिकल कंक्लूजन. अगर नहीं हो पा रहा है दैट्स डिफिकल्ट, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. लेट्स ट्राई टू मैच कि हम ये फॉर्मूला सही चल रहा है कि नहीं. सो इट्स अ कैश पेड प्लस एंडिंग अकाउंट्स पेएबल. सो वी सेट टू ऐड क्लोजिंग अकाउंट्स पेएबल less beginning accounts payable. Inventory again it's your asset, prepaid is again your asset. So prepaid just नाम है, कोई भी asset है तो asset के केस में आपको opening ऐड करना है, closing माइनस करना है. So they add beginning inventory, beginning prepaid, they subtract ending inventory, ending prepaid. कोई भी आपकी asset में कोई भी नाम हो, beginning ऐड होगा, ending subtract. IFT है कोई भी नाम हो, accounts payable, accrued expenses, wages payable, whatever name they give. Ending liability will be added and the opening liability will be subtracted. This is how a formula can be built from the concept which we can learn. कोई भी क्वेश्चन आपको फॉर्मूला कैसे बिल्ड हुआ है उसमें. Wages payable is a liability count. Wages expense is an expense, but wages not good because they're accrued wages or wages payable. So that is Sorry, can you repeat? I can't. wages incurred is your expense, but if that incurred wages are not paid, so it becomes your liability, which is wages payable. एंट्री क्या होती है वेजेस की, सैलरी एंड वेजेस का एंट्री. Wages payable is expense, and the second. एक्सपेंस वेजेस पेएबल वर्ड में ही लायबिलिटी छुपा हुआ है. तो इसे अकाउंट्स पेएबल. सो अकाउंट्स पेएबल इज नॉट द एक्सपेंस. आपका एक्सपेंस क्या होगा, सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस डेबिट टू कैश. अगर कैश में पे हो चुका है तो, अगर कैश में पे नहीं हुआ है तो एंट्री क्या होगा, सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस डेबिट टू अक्रूड वेजेस और दूसरा नाम है वेजेस पेएबल. ठीक है, पेएबल रिसीवेबल दे ऑलवेज रिप्रेजेंट्स योर एसेट्स ऑन योर लायबिलिटी. इट्स नॉट अ इनकम स्टेटमेंट आइटम. Okay. Clear? Yes. Yes, no confused. Salary expense, debit, credit, accrued wages or wages payable. अक्रूड वेजेस उसका दूसरा नाम है वेजेस पेएबल. क्वेश्चन में आपको नाम कुछ भी मिल सकता है, देयर इज नो रूल कि आपको क्या यूज करना है. बट हमेशा याद रखो कि इफ यू सी किसी के नाम के आगे रिसीवेबल लिखा है या पेएबल लिखा है, इट्स अ बैलेंस शीट आइटम, इट्स नॉट अ पीएनएल आइटम. Okay. ठीक है, सेम गोस फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. कैश पेड प्लस एंडिंग लायबिलिटीज माइनस बिगिनिंग लायबिलिटीज. अगेन just the same project, it's a same formula. So हम लोग ऊपर देखा,
So you can just remember to point it out, one for income side and one for expenses side. Over to you. Example number one. Don't look at the solution. Take 10 minutes of time. आराम से करो. You have two things given in the question. Cash कितना collect किया है plus accounts receivable and deferred revenue. Second, cash कितना pay किया है and then you have a prepaid expense and salaries payable. So just try to find out two solution. Number one आपका accrual revenue क्या है and number two आपका accrued expenses क्या है. टेक 10 मिनट्स ऑफ टाइम. आपको टी शेप में करना है. यूपीआई ओके. आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला में फिगर्स को प्लग करनी है. यूपीआई ओके. ओवर टू यू. Uh, yes.
इसमें जो reported cash basis net income of 30,000. Here, would I assume it's earned in service revenue? नो, इट्स नेट इनकम। वर्ड नेट इनकम का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट। याद करो, फार वन योर प्रेजेंटेशन, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस माइनस टैक्सेस, यू गेट नेट इनकम। सो नेट इनकम का मतलब होता है नेट प्रॉफिट। Okay. So what do I do of the 30,000? छोड़ दो अभी उसको, जस्ट राइट नाउ फोकस टू कैलकुलेट अक्रूड रेवेन्यू एंड अक्रूड एक्सपेंस। I think I'm lost. Oh. कहाँ पर आप लॉस्ट हो? अकाउंट्स रिसीवेबल सेल्स में या एक्सपेंसेस में? मैंने सारे अकाउंट्स बनाए लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह क्वेश्चन आंसर करना चलिए, है। इट्स इन द नई गूगल शीट। नई टैब ओपन करते हैं, आप यहाँ पर सोल्यूशन करना मैंने स्टार्ट। नीचे, उसे पिछले शीट में नीचे शुरू किया था। चलिए ठीक है।
सो वेयर आर यू? ठीक है, आपने यहाँ पर अकाउंट्स बनाया है। एक्सपेंसेस को छोड़ देते हैं अभी, लेट्स ओनली फोकस ऑन इनकम। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस और एक्सपेंसेस राइट नाउ। अकाउंट्स रिसीवेबल पे फोकस करते हैं। सो लेट्स सी क्या क्वेश्चन है। एबीसी कंपनी हैड अ कैश कलेक्शंस ऑफ 50,000। सो कैश कलेक्शन हुआ है आपके पास 50,000 का। कंपनी हैज मेड अ कैश पेमेंट एंड रिपोर्टेड अ नेट इनकम ऑफ 30,000। Company has determined a following balance sheet amounts for the opening and ending year ends. Accounts receivable. So let's see accounts receivable. आपका balance brought forward कितना है? 10,000. आपका ending कितना है? 15,000. Looks good. आपने collection कितना किया है? 50,000 का। आपने यहाँ पर 20,000 क्यों डाला cash collection? Mm, uh, Let's change this to 50,000. ठीक है। अभी एक चीज आप समझो, आपने जो 50,000 no, कलेक्ट, but the cash collections of 50,000, the cash payments of 20,000. So, and then cash payments basis of 30,000. So 50,000 is the total amount, and then 20,000 is the cash payments we made हाँ, because तो the rest are रिसीवेबल के लिए क्या रिलेवेंट है? कैश रिसीट्स या कैश पेमेंट? cash payment. व्हाट इज कैश पेमेंट? कब आप कैश पे कब करते हो? Okay, yes. कैश पे आप Then, एक्सपेंसेस के लिए करते हो। yes, बट अकाउंट्स रिसीवेबल इज अ सेल्स, आपको कलेक्ट करना है पैसा। yes. राइट। अभी एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझो, 50,000 का आपको ब्रेकअप नहीं दिया है कि कितना एडवांस है या कितना अनबिल्ड रेवेन्यू का कैश कलेक्शन है। विच मीन्स यू डोंट नो कि 50,000 में से कितना कैश ऐसा है कि जिसमें आपने सर्विसेज दे दी है, या कितना कैश ऐसा है कि जिसमें आपने सर्विसेज देनी पूरे की पूरी बाकी है। सो यू कैन टुक एनी अजम्पशंस। या तो आप कैश कलेक्शन को पूरा का पूरा अकाउंट्स रिसीवेबल में डाल सकते हो, या तो आप कैश कलेक्शन को पूरा का पूरा डेफर्ड रेवेन्यू में डाल सकते हो। योर चॉइस, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो बिल्ड होने वाला है वो हमको रिजल्ट सेम ही देने वाला है। सो लेट्स पुट ओनली कैश कलेक्शन इन अकाउंट्स रिसीवेबल। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हमको 50,000 का कैश मिला, इट इज ऑन अ क्रेडिट साइड। हमारा क्लोजिंग कितना है? 15,000। सो अब हमारा डिफरेंस कहाँ पर बन रहा है? डिफरेंस इज ऑन अ डेबिट साइड, यहाँ पर बन रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? योर डिफरेंस विल बी योर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड प्लस कैश कलेक्शन माइनस योर ओपनिंग। सो डिफरेंस इज 55,000। अभी अकाउंट्स रिसीवेबल में डेबिट साइड अगर कोई डिफरेंस होता है तो व्हाट दिस कैन बी? Uh, अकाउंट, we have provided the services, but we have not received the cash. तो इसका मतलब हो गया अक्रूड रेवेन्यू। यू हैव अक्रूड द रेवेन्यू, यू हैव डिलीवर्ड द सर्विस बट नॉट कलेक्टेड द कैश। अभी डेफर्ड रेवेन्यू पे आता है। सो डेफर्ड रेवेन्यू एंड अकाउंट्स रिसीवेबल विल गो हैंड इन हैंड। एक्सपेंसेस में प्रीपेड प्लस अक्रूड एक्सपेंसेस विल गो हैंड इन हैंड। तो चलो समझते हैं कि अर्न रेवेन्यू में क्या दिया है। यू हैव अ बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 20,000, सो यू पुट परफेक्ट। आपको क्लोजिंग दिया है 5,000। क्लोजिंग बैलेंस इज नॉट 4,000, इट्स अ $5,000। सो आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है डेफर्ड रेवेन्यू का वो है $5,000। नाउ कैश कलेक्शन आपने पूरा का पूरा यहाँ पर यूज कर लिया, तो यू कैन नॉट री यूज अगेन। तो आपका डिफरेंस कहाँ पर बच रहा है? अगेन डिफरेंस इज ऑन डेबिट साइड। कितना डिफरेंस बच रहा है? सो इट्स $20,000 माइनस $5,000, सो इट्स अ $15,000। अभी ऑन रेवेन्यू में डेबिट साइड बैलेंस बचता है, इसका मतलब क्या है? That we received cash, but we didn't provide services. इफ यू रिसीव कैश एंड यू हैव नॉट प्रोवाइड सर्विसेज, तो वो क्या हो, कौन सी आइटम होती है? इफ यू रिसीव कैश बट यू हैव नॉट डिलीवर्ड द सर्विसेज, तो वो कौन सी आइटम होती है? Cash, the deferred revenue. I डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू का क्या बैलेंस होता है? डेबिट या क्रेडिट? credit. तो अगर आपने और पैसा ले लिया, सर्विसेज देनी बाकी है, तो वो डेबिट साइड पे जाएगा कि क्रेडिट साइड पे जाएगा? Okay, so mm, we have provided some of the services.
Yes, we have provided, so you have now earned the revenue. So this is also your accrued revenue. You have earned this money. So अभी आपको क्वेश्चन में पूछा है कि आपका अक्रूड रेवेन्यू क्या है. So your accrued revenue is total of 15,000 plus 55,000, which is 70,000. This is the conceptual framework. अगर आपको ये याद या फॉलो करने में डिफिकल्टी हो रही है, एंड यू कैन गो टुवर्ड्स द फॉर्मूला. एक बार सोल्यूशन देखते हैं. सबसे पहले मैच कर रहा है कि नहीं. ओके, मैच कर रहा है कि नंबर होना चाहिए 70,000. तो आपका फॉर्मूला क्या है? वी सॉ इन द लास्ट पेज. फॉर्मूला इज कैश बेस्ड रेवेन्यू. सो लेट्स पुट व्हाट इज द कैश कलेक्टेड. 50,000. आपको ऐड क्या करना है? एंडिंग ईयर माइनस क्या करना है? बिगिनिंग ईयर. सो प्लस एंडिंग ईयर माइनस बिगिनिंग ईयर, सॉरी माइनस बिगिनिंग ईयर. फिर फॉर्मूला क्या है? प्लस ओपनिंग अर्न रेवेन्यू माइनस क्लोजिंग अर्न रेवेन्यू. सो ऐड करो आप ओपनिंग अर्न रेवेन्यू को और आप माइनस करो क्लोजिंग अर्न रेवेन्यू को. तो ये जो नंबर मिलेगा, दिस इज अगेन गोइंग टू बी योर अक्रूवल बेसिस रेवेन्यू. अब या तो SS70 निकालो, या आपने जो लेजर बनाया उस दोनों का आप टोटल करोगे. दिस ऑल्सो कम्स टू 70,000. सेल साइड आपको अब थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ रहा है कि व्हाट वी डिड. Yes. पक्का. एक्सपेंस साइड ट्राई करो एक बार फिर से. गिव अ ट्राई. नहीं होता है तो आई विल हेल्प यू आउट. For expense side, I just have a question that the ABC company that is purchasing the equipment, will I get an expense account for this? आप सोचो कि आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो? कैश पेमेंट से अक्रूवल में. तो जब आपने इक्विपमेंट लिया होगा तो आपने कैश पे की होगी. तो डेफिनेटली जो 20,000 का कैश पेमेंट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं 5,000 का कैश आउटफ्लो इंक्लूडेड है. लेकिन क्या इक्विपमेंट आपका एक्सपेंस है या आपका फिक्स्ड एसेट है? अगर एक्सपेंस है तो एडजस्टमेंट्स नहीं चाहिए. लेकिन अगर ये फिक्स्ड एसेट है तो आप इसको एक्सपेंस में शो नहीं कर सकते. उसके ऊपर अगेन बाद में आता है. पहले जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर अ नॉर्मल शेड्यूल, प्रीपेड एक्सपेंस एंड सैलरीज पेएबल का. फिर हम इक्विपमेंट के बारे में बात करते हैं. This question is asking for accrued expenses or total expenses.
आप अभी के लिए सिर्फ अक्रूड एक्सपेंसेस पे फोकस करो, डोंट गेट Accrued डिविएट, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, विल गो टू टोटल एक्सपेंसेस एज वेल। राइट नाउ be- जस्ट फोकस हाउ यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू अक्रूवल एक्सपेंसेस ओनली। because accrued expenses is only 4,000. सो यू आर टॉकिंग अबाउट सोल्यूशन की 4000 आ चुका है और यू आर आस्किंग क्वेश्चन। Solution. चलिए एक बार देखते हैं, आई डोंट नो द आंसर, सो लेट्स चेक क्या दिया है क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन सेज यू हैव मेड अ पेमेंट ऑफ 20,000, ठीक है। Prepaid insurance. So you have a opening 2000, closing 4000. You have a opening 2000, closing 4000. कैश पेमेंट 2000 का कहां पर दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया, मैं assume कर रहा हूँ कि remaining. अज्यूम क्यों कर रहे हो कि ये कैश पेमेंट है, डिफरेंस है इसकी वजह से सिर्फ? Yes. ठीक है चलिए, सो लेट्स अग्री कि आपका ओपनिंग बैलेंस है 2000, क्लोजिंग है 4000, तो आपने 2000 आपने पे किए होंगे बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। चलो यहाँ तक वी आर अलाइंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर एक्सपेंसेस जो आपका सैलरी पेएबल। No, it's not the stay account, it's on the right side. तो अच्छा ओके, इसको मैं रिमूव कर दूं। कर दो। लेट्स सी आपका सैलरी पेएबल क्या है। सो यू हैव अ $3000 ऑफ ओपनिंग, 7000 ऑफ क्लोजिंग, एंड देन डिफरेंस इज कमिंग 4000। बट आपने जो कैश पेमेंट है 20,000, इसको कहां पर रिफ्लेक्ट किया है? आइदर यू कैन पुट इन प्रीपेड और यू कैन पुट इन सैलरीज पेएबल। आपको एक जगह पर तो रखना पड़ेगा ना, बिकॉज एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं। सो वेर यू आर पुटिंग, जैसे हमने सेल्स में देखा कि 50,000 आपने कलेक्ट किए हैं, आइदर यू पुट इन अकाउंट्स रिसीवेबल टी फॉर्मेट और यू पुट इन डेफर्ड रेवेन्यू। वैसे ही अगर आपने 20,000 पे किए हैं, आइदर यू पुट इन प्रीपेड इंश्योरेंस और यू पुट इन सैलरीज पेएबल। आपको कहीं एक जगह पर तो रखने पड़ेंगे इनको। Yeah. Then Let's the see. rest 18,000 will go to salaries payable. हाँ तो यहाँ पर आपने कैश कितना पे किया सैलरीज पेबल्स को? 20,000। No, because Now 2,000 cash I put it in the other account. 2000, that's a difference, you have not put cash, that is your difference जो आपने वहां पर accrued expenses डाला हो सकता है। This 2000 you have put based on your analysis. This is not But actual cash payment, this is an analytical cash payment। हो सकता है कि आपको यहाँ कुछ डालने की जरूरत ही ना पड़े। Yes, no, confused? ये cash, लेकिन we don't have 2,000. The question, the total is 20,000. हाँ 2000 तो लेकिन आप लेकर आए हो ना, 2000 क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कहीं पर। क्वेश्चन में कहाँ पर 2000 की बात हुई है? क्वेश्चन में कैश पेमेंट की बात हुई है 20,000। लेट्स पुट दिस वे, अपना कैश पेड कितना किया है? 20,000। नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि आपकी क्या क्या मूवमेंट हुई है ड्यूरिंग द ईयर। आपने सैलरीज पे की, ओके, आपने एक्सपेंसेस इनकर किए, लेकिन ये सारे कैश मूवमेंट है। आपको देखना है कि अक्रूवल क्या हुआ है। आपने जितने भी ट्रांजैक्शन किए ड्यूरिंग द ईयर, उसमें आपने नेट के कैश कितना पे किया है? 20,000। तो कैश बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग में आप इतना एक्सपेंस दिखा रहे हो, लेकिन अब आपको अक्रूवल बेस पे जाना है, तो आप अक्रूवल बेस पे क्या चेक करोगे कि क्या ये एक्सपेंस एक्चुअली इनकर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो ही आप उसको दिखाओगे। सो यू हैव टू नाउ अंडरस्टैंड कि जर्नल एंट्रीज क्या क्या हो सकती है। लेट्स से आपने जब कैश पेमेंट किया, तो इसकी कैश बेस्ड अकाउंटिंग में एंट्री क्या हुई होगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश पेड 20,000। अब ये जो एक्सपेंस डेबिट है, इसको आपको कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा ना। या तो ये प्रीपेड एक्सपेंस है, आप पूरा का पूरा 20,000 वहां पर दिखाओ, या तो ये सैलरी एक्सपेंस है, आप इसको सैलरी एक्सपेंस में दिखाओ। लेकिन आपको But कहीं this ना is कहीं salaries payable. सैलरी पेबल इज अ क्लोजिंग बैलेंस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, कि आपका स्टार्टिंग में 3000 था, एंड में 7000 है, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर भी तो एम्प्लॉयज लोगों ने काम किया होगा ना, विद इन 12 मंथ्स, जहां पर आपने एक्सपेंसेस इंकर किए होंगे और आपने कैश पेमेंट्स किए रहेंगे। But won't salaries expense be a different account because you said that payable is a liability account? नहीं, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन, फिर से बोलो। सैलरी एक्सपेंस एक अलग अकाउंट नहीं होगा, क्योंकि हंड्रेड सैलरीज परसेंट अलग अकाउंट होगा। सैलरीज पेएबल लाइबिलिटी अकाउंट है, तो फिर हम वहाँ 20,000 कैसे एज्यूम कर सकते हैं? चलिए आप मुझे जर्नल एंट्रीज बताते जाइए। लेट्स फॉरगेट दिस, सैलरी एक्सपेंस का एंट्री क्या होता है व्हेन इट इज पेड इन कैश?
Salary expense, debit, credit, cash. क्रेडिट कैश। चलिए, सैलरी एक्सपेंस व्हेन इट इज नॉट पेड इन कैश। So salaries expense, debit, credit, accounts payable. लेट आई एम यूजिंग सैलरीज पेबल, ठीक है। नाउ Yes. लेट्स से आपने ये जो अनपेड सैलरी थी वो पे कर दी। व्हाट इज द एंट्री फॉर दिस? Uh, debit, accounts payable, credit, cash. सो दैट इज सैलरीज पेबल Yes. टू कैश। Yes. सो आया आपका सैलरीज पेबल यहाँ पर। Yes. सो दैट मीन्स दिस इज द अकाउंट बैलेंसेस। पिछले साल आपने 3,000 का खर्चा किया था जो पे नहीं किया था, दिस इज योर एंट्री नंबर 2, योर बिगिनिंग एंट्री। उसमें अगर आपने कुछ ड्यूरिंग द ईयर पे किया है, सो दिस इज योर बैलेंस एंट्री जो कैश मूवमेंट हो रही है। और अगर आपने ईयर एंड पे कुछ पे नहीं किया इस ईयर के लिए, दैट इज योर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। सो इट डजंट मैटर कि आपके लायबिलिटी है या आपका एक्सपेंस है, कैश मूवमेंट कैन बी ऑफ एनी ऑफ द थिंग्स। अगर आपने इसी साल एक्सपेंस इनकर कर दिया है तो वो सैलरी एक्सपेंस में जाएगा। आपने इनकर करके पे नहीं किया है तो वो सैलरी पेबल में जाएगा। लेकिन आप कभी ना कभी तो अकाउंट को सेटल करोगे, आपकी लायबिलिटी को पे करोगे, तो अगेन वो लायबिलिटी अकाउंट में आपका कैश जाएगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हमने अकाउंट्स रिसीवेबल में क्या किया। वी यूज द सेम कॉन्सेप्ट ना, कि वी हैड एन ओपनिंग बैलेंस, वी हैड अ क्लोजिंग बैलेंस, देन वी हैड अ कैश कलेक्टेड, हमने अज्यूम किया कि वो अकाउंट्स रिसीवेबल का है, एंड देन वी हैड अ डिफरेंस। तो यहाँ पर भी तो आपका क्वेश्चन बन सकता था कि अकाउंट्स रिसीवेबल में कैश कैसे आ सकता है। तो इट्स एग्जैक्ट अपोजिट थिंग। यहाँ पर आप सब कुछ सेल्स साइड पे बात कर रहे हो, सेल्स एंड अकाउंट्स रिसीवेबल। यहाँ पर आप सब कुछ एक्सपेंस साइड से बात कर रहे हो, एक्सपेंसेस एंड अकाउंट्स पेएबल। ट्रीटमेंट तो सेम है ना, एक जगह आपका एक्सपेंस है, एक जगह आपकी इनकम है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हैंड इन हैंड सेम ही चल रहा है ना। तो Right. गेटिंग द पॉइंट? Yes. ठीक है, तो आप जब सैलरीज पे करोगे तो आपका एंट्री क्या है? सैलरीज पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब आपका डिफरेंस यहाँ पर बच रहा है। सो लेट्स आइडेंटिफाई कि डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं। सो यू हैड 20,000. 20 प्लस 7 माइनस 3, सो दिस इज 24,000। आपका सैलरीज पेएबल में डेबिट सॉरी क्रेडिट साइड हो रहा है, तो व्हाट दिस कुड बी? योर अक्रूड एक्सपेंसेस 24,000 कैन बी। Yes. चलिए, अक्रूड एक्सपेंसेस आपको अब तक मिल चुका है, दिस कुड बी योर 24,000। अब हम प्रीपेड इंश्योरेंस पे एक बार वापस आता है। क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रीपेड इंश्योरेंस में बिगिनिंग बैलेंस था आपका 2,000 का, एंडिंग था आपका 4,000 का। इसका मतलब आपने डेबिट साइड पे डिफरेंस क्रिएट किया। और डेबिट साइड पे डिफरेंस कब क्रिएट होगा? जब आपने ज्यादा कैश पे की होगी प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए। सो दिस 2,000 डजंट रिफ्लेक्ट अक्रूवल लेवल ऑफ एक्सपेंसेस। तो आप क्या करोगे? 2,000 को माइनस करोगे एज अ नेगेटिव अक्रूड एक्सपेंस। बिकॉज ये आइटम ऐसी है, जब हमने कैश बेस्ड अकाउंटिंग किया होगा तो हमने एंट्री क्या की होगी? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड। सॉरी, हमने जब कैश बेस्ड अकाउंटिंग की होगी हमने एंट्री क्या की होगी? इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। वाई हमने एक्सपेंस बुक किया होगा? बिकॉज कैश बेस्ड अकाउंटिंग में हम लोग प्रीपेड या लायबिलिटी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट फॉलो ही नहीं करते हैं। वी सिंपली से व्हेन यू पे अ कैश रिकॉर्ड द एक्सपेंस, व्हेन यू रिसीव द मनी रिकॉर्ड द सेल्स। तो जब ये 2,000 का डिफरेंस डेबिट साइड पे क्रिएट हुआ है, इसका मतलब 2,000 का आपने प्रीपेड एक्सपेंस ज्यादा किया है। तो कैश मेथड ऑफ अकाउंटिंग में हमने इनको एक्सपेंस दिखा दिया है, जबकि ये एक्चुअल में अभी एक्सपेंस है ही नहीं, ये एक्सपेंस फ्यूचर में जाके बनेगा। तो अभी अक्रूड बेसिस ऑफ एक्सपेंसेस में से इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। सो योर नेट अक्रूड एक्सपेंस राइट नाउ कम्स टू 22,000। एक बार बुक में यहाँ तक सोल्यूशन देखते हैं कि क्या हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सो लेट्स से यू हैव अ कैश पेमेंट ऑफ 20,000। यहाँ पर फॉर्मूला बेसिस पे चीजें चल रही है तो हम फॉर्मूला बेसिस पे करते हैं। सो व्हेन यू हैव अ सैलरी पेएबल, सो ऐड क्लोजिंग लायबिलिटी माइनस ओपनिंग लायबिलिटी। असेट है तो आप ऐड कीजिए आपका सॉरी क्लोजिंग बैलेंस और माइनस कीजिए आपका ओपनिंग बैलेंस। सो इफ यू डू मैथमेटिक्स, 7,000 माइनस 3,000 गिव्स यू 4,000, माइनस 4,000 गिव्स यू 0, प्लस 2,000 गिव्स यू 22,000। तो यहाँ तक हम लोग सही जा रहे हैं कि हमारा एक्सपेंस जो है
वो 22,000 है, अगर और कोई एडजस्टमेंट हमें नहीं दिए है तो। क्लियर है यहाँ तक? Yes. पक्का साउंड नहीं कर रहे हो कॉन्फिडेंट? Uh, we are here assuming that since this it's the topic, so we are moving from cash to accrual because they यस, didn't कैश टू mention. अप्रूवल, यस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से हम अप्रूवल में मूव कर रहे हैं चीजों को, एंड हेंस वी आर टेकिंग कैश एज अ बेस। उसमें फिर हम एडजस्टमेंट्स पार्क कर रहे हैं और वहां से हम लोग आ रहे हैं अप्रूवल बेसिस ऑफ अमाउंट पे। Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें दो चीजें और दी है। सो आपने जो 20,000 कैश पे किया है, इसमें एक ट्रांजेक्शन ऐसा भी है जहां पर आपने 5,000 का इक्विपमेंट लिया है। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इक्विपमेंट का एंट्री क्या होता है? सो हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जब फॉलो करते हैं, इट डजंट मैटर कि ये फिक्स एसेट है, प्रीपेड है, वी सिंपली से एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। लेट्स से 5,000 आपने पे किया है, बट जब आप अक्रूवल में इसको मूव कर रहे हो, यू नो इट्स नॉट अ एक्सपेंस, इट्स अ पीपीएनडी, इट्स योर फिक्स्ड एसेट। तो ये 5,000 भी आपका एक्सपेंस नहीं है अंडर अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सो अब तक हमको जो रिप्लाई मिला अक्रूड एक्सपेंसेस का 22,000, इसमें से हमें फर्दर माइनस करना पड़ेगा पेमेंट फॉर फिक्स्ड एसेट्स, बिकॉज दिस इज नॉट योर एक्सपेंस अंडर अक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब 5,000 को फर्दर माइनस कर रहे हो, लेकिन आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये इक्विपमेंट अगर कैपिटलाइज हुआ होता तो आप इसमें 5 इयर्स का डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते। तो 5,000 का फिक्स असेट, 5 इयर्स का यूजफुल लाइफ, हर साल का डेप्रिसिएशन $1,000। तो अगर आप अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग में होते तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी चार्ज करते, विच वुड बी $1,000। तो आपका अब नेट अक्रूड एक्सपेंसेस क्या हो गया है? सो इट्स 22,000 जो हमने आइडेंटिफाई किया, माइनस इक्विपमेंट जो आपका एक्सपेंस नहीं है, बट प्लस ऐड करो आपका डेप्रिसिएशन जो आपका एक्सपेंस बनता है। सो योर नेट अक्रूड बेसिस एक्सपेंसेस इज $18,000। सोल्यूशन देखते हैं कि हमारा नेट मैच कर रहा है अक्रूड, यस $18,000 इट मैचेस। क्लियर है कैलकुलेशंस ये पर्टिकुलर एग्जांपल में? So अगर हम cash पे, since it's 20,000 and then we have a 5,000 equipment, then how in salaries payable can we put 20,000? वी हैव नॉट पुट इन सैलरीज पेएबल, ये तो मैंने आपको लॉजिक बताया है, इसलिए दिस इज अ टी फॉर्मेट, वी आर अज्यूमिंग। अब यहाँ पर एक और टी फॉर्मेट ओपन कर लो, दिस इज योर इक्विपमेंट। नाउ आई विल से कि आप या तो इक्विपमेंट में कैश पेमेंट दिखाओ, या सैलरीज पेएबल में दिखाओ, या आप दिखाओ प्रीपेड इंश्योरेंस में, बिकॉज वी डोंट नो कि 20,000 में से कितना कहाँ पर गया है। सो वी नो टोटल कैश एक्सपेंस 20,000 है। अब उसमें से आप चेक कर रहे हो कि भाई प्रीपेड में सही है कि नहीं, क्या सैलरीज पेएबल में सही है कि नहीं, क्या इक्विपमेंट में सही है कि नहीं। सो जस्ट लाइक हमने रेवेन्यू में क्या किया, या तो आप अकाउंट्स रिसीवेबल में दिखाओ या डेफर्ड रेवेन्यू में दिखाओ। सेम वे एक्सपेंसेस में या तो आप प्रीपेड में पूरा दिखाओ, या सैलरीज पेएबल में दिखाओ, या इक्विपमेंट परचेज में दिखाओ। अल्टीमेटली दिस इज जस्ट अ लॉजिक विच वी आर ट्राइंग टू बिल्ड, बट हम फॉर्मूला क्या फॉलो कर रहे हैं? कैश बेसिस में हमने हमारा क्या एक्सपेंस है, प्लस और माइनस ऑल दी एडजस्टमेंट, और हमारा अक्रूवल एक्सपेंस क्या बनता है। Okay. ठीक है, मेक सेंस? थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है, लेकिन ये एडवांस लेवल पे जाने से पहले इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे बेस कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। दिस चैप्टर इज ऑफिशियली एंडिंग। कोई क्वेश्चन आपको यहाँ पे? Mm, No. basically, like uh, whenever we have accounts, we'll just assume one is considering the whole amount. सॉरी, व्हाट कम अगेन? Like we will just put the whole cash amount in one account regardless of यस, where it's अगर आप happening. टी फॉर्मेट वाला लॉजिक यूज कर रहे हो तो, इफ यू वांट टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूलास, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला में इंफॉर्मेशन को प्लग इन करना है, एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली गेट द आंसर। And how are they calculating the net income? नेट इनकम का मतलब क्या होता है कि अक्रूड रेवेन्यू माइनस अक्रूड एक्सपेंसेस। आपका अक्रूड रेवेन्यू कितना बना यहाँ पर? सो द एग्जांपल व्हिच वी सॉ, जो बुक में दिया है, आपका अक्रूड रेवेन्यू बन रहा है 55,000 प्लस 15,000। सो योर अक्रूड रेवेन्यू इज 70,000। आपका अक्रूड एक्सपेंसेस कितना बना? 18,000।
Let's put accrued expenses. This is your 18,000. So what is your accrued net income? नेट इनकम का फॉर्मूला हमेशा क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस. So your revenue minus expense 52,000 is your accrued net income under the accrual method of accounting. Cash method में आपकी इनकम की 30,000. How? Cash collection minus cash expense 50 minus 20 30,000. Accrual method में आपकी इनकम क्या बनती है? 70,000 minus 18,000 52,000. Okay. ठीक है. क्विकली एक बार हम डेक देख लेते हैं. आई थिंक एवरीथिंग वी हैव कवर्ड. एंड देन आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू इन होमवर्क टू प्रैक्टिस, क्योंकि इसके एग्जांपल्स आपके बैकर में बहुत कम है. एंड आई एम गिविंग यू इन राइटिंग कि इसके आपके कम से कम 2-3 सिमुलेशन, सॉरी 2-3 एमसीक्यू, एक सिमुलेशन आपको सीपीए एग्जाम में मिलेगा एंड 100% मिलेगा ही मिलेगा. सो आई हैव प्रिपेयर्ड वन मोर एग्जांपल. यू कैन डू दिस एज अ होमवर्क. कोई भी क्वेश्चन है तो हम लोग बाद में इसमें डिस्कशन कर सकते हैं. But what we are doing, you are given a certain cash based fact, you are given certain accrual based fact, और आपको कैश में से आपको अक्रूवल बेस में चीजों को कन्वर्ट करना है. आपके पास है एडवांस रेवेन्यू, आपके पास है अनबिल्ड रेवेन्यू, सॉरी आपके पास है प्रीपेड एक्सपेंस, और आपके पास है अक्रूड सैलरी, प्लस आपके पास है डेप्रिसिएशन. तो जैसे ये एग्जांपल था बुक में, इट्स अ सिमिलर लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस गिवन इन दिस एग्जांपल आल्सो. आप इसको ट्राई करोगे, कोई भी क्वेश्चन है यू विल गेट बैक टू मी. Okay. ठीक है, एक बार क्विकली देख लेते हैं. ओसीबीओए, अदर कॉम्प्रिहेंसिव बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. वी कैन हैव अ कैश बेस, मॉडिफाइड कैश बेस को हम देखेंगे गवर्नमेंटल अकाउंटिंग में. यू कैन डू अ टैक्स बेसिस, यू कैन हैव अ प्राइस लेवल एडजस्टेड अकाउंटिंग, यू कैन हैव अ गवर्नमेंटल रेगुलेटरी बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. ऑल दिस थिंग्स वी कवर्ड यस्टरडे. फिर हमने देखा था कैश बेस में आप क्या करते हो? रेवेन्यू रिकॉर्डेड व्हेन कैश रिसीव्ड, एक्सपेंस रिकॉर्डेड व्हेन कैश पेड. असेट में आपके पास सिर्फ कैश होता है और कोई असेट होता नहीं है. लायबिलिटीज आपके पास होती नहीं है. कैश बैलेंस बाय डिफॉल्ट आपका इक्विटी बन जाता है. ऑन द मॉडिफाइड कैश बेसिस इग्नोर करेंगे अभी. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पार्शियल कैश प्लस पार्शियल अक्रूवल मेथड ऑफ अकाउंटिंग. देन हमने देखा है कि आप इनकम टैक्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना सकते हो. फॉलो द रूल्स गिवन बाय द इनकम टैक्स एक्ट. फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन के लिए आप SLMWDB यूज नहीं करोगे, यू विल यूज अ मॉडिफाइड कॉस्ट एक्सेलरेटेड सिस्टम. वारंटीज, अक्रूवल्स, प्रोविजन सब क्रिएट नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे. सो अगर आप इनकम टैक्स बेसिस पे भी फाइनेंशियल्स बना सकते हो, कैश बेसिस पे भी बना सकते हो. एग्जाम में आपको आएगा कि आपके पास कैश या इनकम टैक्स बेसिस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आप कन्वर्ट करो इसको अक्रूवल बेसिस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. सो उसके हमने 2-3 एग्जाम्पल्स अभी देखे. दिस आर योर फॉर्मूला. आप या तो लॉजिक करो या आप इसको याद कर लो. आइदर ऑफ द थिंग्स विल वर्क. अगर आप याद करते हो तो आपको जस्ट प्लग इन करनी है डिटेल्स, और आपको बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो क्वेश्चन में पूछी होगी. अगर आप याद नहीं करना चाहते हो इतने सारे फॉर्मूला, यूज अ टी शेप लेजर अकाउंट एंड यूज द लॉजिक की सिचुएशन क्या क्या हो सकती है. एंड देन दिस इज द सेम एग्जांपल जो हमारी बुक में था. अगर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो राइट हैंड साइड पे मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है. अगर आप फॉर्मूला नहीं बनाना चाहते हो तो टी शेप लेजर अकाउंट, यूज द लॉजिक्स एंड यू विल गेट योर राइट आंसर्स. ठीक है, ऑल क्लियर. Yes. नाउ दिस इज द एंड ऑफ योर फार 2, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे. आई कम टू आवर बैकर बेस्ड. हमारे पास पार्ट 2 में दो चीजें बाकी है. बोथ थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वीक बिकॉज बोथ आर हैवी थिंग्स. And already this OCBOA is a heavy thing. I don't want you to get confused with the overloading of information. Next week हमारा टारगेट रहेगा to get done with this two topic, and by next Friday we will be done with FAR 2. आपको जो एग्जाम है ड्यू आइदर टुमारो या संडे, दैट इज ऑल अबाउट फार 1 एंटायरली, प्लस फार 2 के सारे टॉपिक एक्सेप्ट हमारे रेशियो एंड रेवेन्यू रिकग्निशन. एंड हैवी फोकस विल बी ऑन फार 2. फार 1 विल बी लाइक 20-25% वेटेज, बाकी का 80% वेटेज फार 2 से आएगा. सो डू प्रैक्टिस. ये एक एग्जाम्पल है, आप उसको सॉल्व करो. एनी क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज बिफोर योर एग्जाम. हम लोग एक बार वापस कनेक्ट करेंगे लेटर इन द डे और अर्ली टुमारो. अगर कोई डाउट नहीं है तो वी आर गुड टू गो. बाकी के कोई भी टॉपिक पे भी डाउट है आप मेरे को पूछ लो. एंड ट्राई टू गेट 90 इन दिस संडेस एग्जाम. I know, yes, I'm trying to complete the MCQs and simulations since we have covered a lot of modules really quick, so there's a lot of
MCQs and डन है, TVs फिर ठीक left. है। हाँ, टेक योर टाइम बैक, जहां पर भी क्वेश्चन है मेरे को पूछो। नेक्स्ट वीक जो मैंने बोला, दो बड़े टॉपिक्स वी हैव टू कवर एंड बोथ आर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, बहुत फॉर्मूलाज याद करने हैं। एंड रेवेन्यू रिकग्निशन विल ट्रेन आउट योर एनर्जी, अ कंप्लीटली न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद अ लीगल लैंग्वेज। तो बहुत सारी चीजें हमें वहां पर नई नई है जो समझनी है। एंड नाउ वी आर ऑफिशियली डाइविंग इनटू अ रियल लाइफ टॉपिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब तक हमने जो भी किया, दिस वाज ओनली अबाउट कॉन्सेप्ट बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, रेवेन्यू रिकग्निशन ईयर 606 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, रेशियो ऑफिशियली और डिस्क्लोजर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डेटर्स, इन्वेंट्री, पीपीएनडी, ये हर एक चीज के ऊपर एक पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। सो नाउ वी आर एक्चुअली डाइविंग फॉर फार 3 फार 4 इनटू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। FAR 5, how to prepare financial statements, specifically consolidation and business combination, plus cash flow statement. And FAR 5 हमारा basic end कर देगा। FAR 6, only how a governmental accounting is different from the normal accounting. तो कोई भी डाउट हो अब तक के आप मेरे को पूछ लेना, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग इनटू अ रियल लाइफ सिनेरियो, रियल कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और हम लोग बहुत चीजों को बार बार रेफर करेंगे कि हमने फार 1 में देखा था कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, हमने फार 2 में देखा था सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होती है। एंड ऑल द थिंग्स यू नीड टू रिकलेक्ट टू मेक श्योर कि आप मेरी पेस पे चल रहे हो। सर मुझे स्टडी मेथड में पूछना चाहिए। मेरा यही मेथड है कि I make the notes, then I do the MCQs, then I do the sims. That is okay. परफेक्ट, परफेक्ट है, Okay. दैट इज द राइट मेथड टू गो। Okay. Also, एक ये है कि once we are covering the syllabus, how do I remember the previous modules we have covered? उसी के लिए एग्जाम्स है। सो हम लोग थोड़ा थोड़ा एग्जाम का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगे। मे बी दिस वीक इट्स ओनली फार 1 प्लस फार 2। नेक्स्ट वीक मे बी आई हैव अ 2 एग्जाम, फार 1, फार 2 एंड फार 3। एंड वी विल ऑलवेज हैव अ कैच अप एग्जाम्स, मतलब मैं आपको कभी भी फार 1 फार 2 छोड़ने नहीं दूंगा। एवरी वीक आपको उसका 10% तो 10% एग्जाम में आएगा ही आएगा। दिस इज ओनली अ वे यू कैन रिमेंबर ओल्ड टॉपिक्स बाय कंटिन्यूइंग विद द न्यू टॉपिक। और जो आपका टारगेट है, विद इन 90 डेज वी हैव टू गिव द एग्जाम, तो आपके पास रिवीजन का कोई टाइम नहीं है। इट्स अ रियल टाइम स्टडी प्लस रियल टाइम रिवीजन ऑल्सो। तो हम वाईटीडी, हम क्यूमुलेटिव एग्जाम्स करते जाएंगे। फार 4 होगा तो फार 1 फार 2 फार 3 फार 4, चारों का कंबाइंड, चारों का इंडिविजुअल एग्जाम भी रहेगा। सो यू कीप रिमेम्बरिंग ओल्ड टॉपिक्स प्लस यू कीप एडिंग द न्यू टॉपिक्स। Okay. चलिए ठीक है, आई सी यू नेक्स्ट वीक। आपको एग्जाम जब लिखना हो मेरे को बताना, आई एम गोइंग टू शेयर यू द एग्जाम पेपर फॉर दैट। Okay. Can you share me the slides for two? पार्ट 2 मैं आपको भेज देता हूँ, रुको अभी भेज देता हूँ। चलो, Okay. ये रेशियो वाली मैंने भेज दी। और एक और स्लाइड हो सकती है इसमें। पार्ट 2 हमारा जो फर्स्ट था, अकाउंटिंग चेंजेस वगैरह। सो आई हैव शेयर्ड दिस आल्सो विथ यू, ठीक है, ये भी मैंने आपको भेज दी। Okay. और रिकॉर्डिंग्स तो आपके पास अब फोल्डर का एक्सेस ही है, राइट? डायरेक्टली यू कैन जस्ट Yeah. चेक डेली बेसिस पे। Yes. चलिए, ऑल राइट, ओके, All right. थैंक यू, सी यू Bye. नेक्स्ट वीक, बाय।